Hello guys, good morning everyone. ऐसे बच्चे लोग, good morning. How are you all? नमस्ते, good morning. कुछ है बात करने के लिए, कुछ है बोलने के लिए? I'm good, सस्ती। अरे आप एनवायरमेंटल में क्यों नहीं आ रहे? बात करना पड़ेगा। शेल वेरिएट का बारे में, एक्स का बारे में, तुम्हें जेई का जॉब मिल गया? No, don't try. Because the graph is the same for beta and no need to explain, no need to give two names. No need to give two names. First of all, both graphs are same. No need to give two names. One name is enough. No, math is going to start from 11th onwards. 11th onwards, engineering math is going to start. Uma Maheswara sir is going to start math 11th onwards. No need of अलग subscription. You can go ahead. Same subscription, no issue. हिंदी में पूछ लो, रिक्वेस्ट करो, बात करेगा थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मैथ्स को लैंग्वेज का जरूरत क्या है? आकाश, मेरा बताओ, मैथ का बारे में लैंग्वेज है क्या? हाँ, मैथ itself is a language, numbers itself are the language. BV Reddy are not going to take in civil, that is the problem. Devu Malya and Ranasingha. BV Reddy are never launched the course in civil engineering, that is the problem here. Good morning Saurabh. आप क्यों आ गया रे बेटा इधर? संतोष कुमार पुराश. So, okay, doubt पूछना, you can ask in Hindi but he can explain English only. आकाश मीना, crashing हो जाएगा बाद में, थोड़ा टाइम का बाद में हो जाएगा crashing. पहले हम क्वेश्चन करेंगे, then we will do crashing. चलो, ready. 20 minutes के बाद आ जाओ, 20 minutes के बाद आ जाओ पुराश. In PERT, the time estimates of activities and the probabilities of occurrence follow. So ये पोल में दे दो ना. I will give 30-second poll. 30-second poll दे रहे, पोल में दे दो बेटा. PERT time estimates of activities and the probability of their occurrence follow. रेवंत, गौतम, षष्ठी, अमन, दीपक, दीप, ज्ञानेंद्र, देवु, महिमा, हर्ष, अनन्या, नवनीत, यश, सौरभ. अरे ये बात बताओ मेरे को, ये बात बताओ, पॉइजन किसको चाहिए? पॉइजन किसको चाहिए बेटा? Nowhere we have written poison. Why you selected? Who selected B? Who selected B? Please. आप मैथ पढ़ दो. अरे ऐसा कुछ नहीं रेवंत. No. पॉइजन नहीं चाहिए ना हमको, पॉइजन. And we have written very clearly. Yes Akash. We have written very clearly. Activity होगा तो beta distribution. Activity होगा तो beta distribution. Project is normal distribution. Project is a normal distribution. Activity is beta distribution only. Activity always. So this you must understand. Remember, so many times this question came, very important. Very important. Give this in poll. Critical path duration is having what probability of completion? So critical path duration as per normal distribution, as per PERT, as per normal distribution, हम क्या बना दिया कल? We have done this. This is 50%. इधर 50% आ रहे, बोल दिया ना? 50% आ रहे, बोल दिया ना हम? Very clearly. New value. Then it will go on adding up. Time go on increasing, it is going on adding up. Time go on decreasing, it is going on reducing. That is very simple. If your critical path duration is 20 days, probability is 50%. If you are giving 30 days, probability of completion of project increase हो जाएगा, decrease हो जाएगा. Simple ना? गौतम समझ आ रहा है? If you are giving 30 days, probability of occurrence or completion of project increase हो जाएगा. So that is what we are talking with respect to normal distribution. दे दो पोल में. फाइनली आ गया बेटा, देवो क्या हो गया बताओ? टाइम एस्टिमेट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोजेक्ट का बारे में बोल दिया, वो भी बोल रहे प्रोजेक्ट. अच्छा गारू, प्रोजेक्ट इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एक्टिविटी होगा तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. ये बाइनोमियल कौन दिया रे बेबू? बाइनोमियल क्या है? चलो गो है. अरे कौन रे बेटा देबू? ऐसा कभी आप भाई आर सेइंग 100% देबू, ऐसा बोलने के बाद ऐसा भी हो जाएगा. वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज मोर.
variance more, uncertainty more. लिख दिया ना, variance directly proportional to uncertainty, uncertainty लिख दिया ना. You are silent but दिल में ऐसा सोच रहे ना, मन में वो 100% is coming, केपी साहब बहुत खुश हो जाएगा, ऐसा सोच लिया. That is why people are giving wrong answer. See this one, see this question, how many times came? 1 2 3 4 5, and recently 2023 also. So please go for the answer properly. अरे ये बार बार कौन कर रहे बाबू, दिमाग है नहीं है? Who is giving it? वांटेडली दे रहे क्या? वांटेडली दे रहे क्या? So you are giving wantedly. Okay, as your wish. ऐसा भी मर जाओ, ऐसा भी मर जाओ बेटा. They are talking about activity. Activity is beta distribution. They are talking about project, normal distribution. If they want to die, go for a Poisson distribution. Okay guys, चलो ऐसा चलो हो जाएगा जिंदगी में. It is estimated that an activity can be assigned an optimistic duration of 16 days, T naught, pessimistic duration of 28 days, TP, most likely duration of 19 days. What is expected duration? पोल में दे रहे, अच्छे से दे दो, तुक्का मत दे दो, सॉल्व करके बताओ. Those who not completed yesterday class are caught. Giving answer, please raise your hand. Caught नहीं खत्म हो गया, आज क्लास कंटिन्यू कर रहे. कौन है बेटा, बाहर आ जाओ. Those who are doing that. Expected duration T naught plus 4 Tm plus Tp by 6. This is formula. This is formula that two people who want to spoil the poll, please do this guys. Write down. T is equal to T naught plus 4 Tm plus Tp by 6. 16 plus 4 into 19 plus 28 by 6. 20 days. 20 days. हो गया काम. Good, Rana Singha, keep going. You got eligibility to get a shadi. Deep, Aman, Gautam, Devumalia, Chagaru, Deepak, very good. In a multi-path PERT network, project duration from critical path analysis always 50% of probability. Mu, critical path analysis mu को बना दिया ना हम mu को. For that mu, it is 50%. It is true, no doubt, no doubt, no doubt about it. The expected throw path duration together with 3 times of standard deviation of that expected duration must be considered for इसको critical path को. All नहीं बेटा, all नहीं, critical paths in the network. Understand the mistake, महिमा गारू. Clear? अमन कैसे बेटा, तबियत ठीक हो गया? So ये सिर्फ critical path को, why? Because you are taking mu plus or minus 3 sigma. Mu is from CP. Mu is from critical path only, not from all paths. Mu is from CP only, not from all paths. That is why. Slack time in PERT analysis. PERT analysis में slack time क्या चल रहा है? बहुत अच्छे से लिख दिया नोट्स में स्टार मार्क डाल के. Slack time is minimum for critical events. It is not 0. It is not 0. Please understand. It is always 0 for critical activity if it is a CPM analysis. If the same question is given, slack time in CPM analysis always 0 for critical activity, but minimum in PERT analysis. Wow. Activities ABCD constitute a small project. Their interrelationship, expected duration, standard deviation are shown in the figure. So what they have given? Expected duration, standard deviation. Means this is a TE, this is sigma. TE, sigma. TE, sigma. TE, sigma. What is mu? Just add all the values, 8 plus 9 plus 12 plus 18. 39, 47. 47 beta. 47 mu. Mu is 47 days. With a view of improving speed of implementation, each of BCD are split into 3 equal segments, maintaining appropriate relationship between A and each of these 9 segments. What will be standard deviation of modified project duration after segmentation to the nearest 1/10th unit? ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ ना. With the view of improving speed of implementation, each of B, C and D split into 3 equal segments. Each of B, C and D split into 3 equal segments. So this is A. Okay, this is A. B, C, D. हर एक आदमी 3 equal segments कर बना दिया, ऐसा बना दिया.
So each is split into B, C, D. Each is split into 3 equal segments. समझ आ रहा है? BCD is split into 3 equal segments. So total 9 segments हो गया ना? 9 segments हो गया ना? Then maintaining appropriate interrelationship between A and each of these 9 segments. Maintaining appropriate interrelationship between A and each of these 9 segments. What will be standard deviation of? What will be standard deviation of modified project duration after segmentation? समझ आ रहा है? So we can take like this. This is A, B1, B2, B3. Next, C1, C2, C3. Then B1, B2, B3. आ गया? B1, B2, B3, C1, C2, C3. So what is B total duration? 9 days. 3 days, 3 days, 3 days. C total duration 12 days. 4 days, 4 days, 4 days. D total duration 18 days. 6 days, 6 days, 6 days. ऐसा बना दिया. 3 segments each. But finally B is completed in 9 days. Finally total activity B is completed in 9 days. Total activity C is completed in 12 days. C is completed in 12 days. Same total activity D completed in 18 days. Total activity D completed in 18 days. Then what about standard deviation? एक ऐसा चेंज हो जाएगा. Again, standard deviation can be divided into 3. Can we split into 3 now? Can we split into each standard deviation? 1, 1, 1. देखो 1, 1, 1. No, 1.5, no, 4.5. This is, sorry, 4.5. 1.5, 1.5, 1.5. The next one, 3. 1, 1, 1. Next one, 0.5, 0.5, 0.5. These are standard deviation. Final standard deviation क्या हो जाएगा? Under the root of 1.5 square, 1.5 square, 1.5 square, plus 1 square, 1 square, 1 square, 0.5 square, 0.5 square, 0.5 square. 3.24. ऑप्शन में कुछ नहीं. हाँ सॉरी, ये भी याद करना पड़ेगा. ये को स्टैंडर्ड डिविएशन. गुड अमन जी. प्लस 3 स्क्वायर ले लो बेटा, प्लस 3 स्क्वायर. वो भी याद करो, वो भी याद करो. 3 स्क्वायर ये वाला भी लेना पड़ेगा. या कंसीडरिंग ओनली दोस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ये आल्सो टू बी टेकन. अब क्या है वो भी याद करो. 4.58. चलो मिल रहा है. इज दैट क्लियर गाइस? पूरा का पूरा परेशान में चल जाएगा. हम ये देखने के बाद पूरा का पूरा परेशान में चल जाएगा. हाँ देवो मालिया सुनो. देयर आर 3 एक्टिविटीज आफ्टर ए बी सी डी. each activity divided into 3 segments, so that each total duration, each standard deviation also divided into 3 segments. Activity B duration 9 days divided by 3 days. Activity C total duration 12 days divided by 3, C1 C2 C3 4 days. Activity D total duration 18 days divided into 3, 6 days 6 days 6 days. इनका स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसा डिवाइड करने के बाद सिग्मा B1 सिग्मा B2 सिग्मा B3 1.5, सिग्मा C1 सिग्मा C2 सिग्मा C3 1, सिग्मा D1 सिग्मा D2 सिग्मा D3 0.5. हर एक आदमी का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन लेने के बाद टोटल प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा. हमारा रेगुलर फार्मूला. समझ आ रहा है बेटा? चलो डन. बताओ आंसर बताओ. कमेंट बॉक्स में दे दो प्लीज. प्लीज गिव इन कमेंट बॉक्स. प्लीज गिव इन कमेंट बॉक्स. आदित्य गारू क्या हो गया? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पूछ लिया. कंप्लीशन टाइम इन PERT एनालिसिस. कंप्लीशन टाइम मींस इट इज अबाउट project completion time. That is normal distribution only. Done. PERT network is event oriented and it does not reflect on time or resources. Is it true? Is it does not reflect on time and resources? False. How many options we are having? Statement 1 false. Only one option we are having. Statement 1 false. Planners can decide about uncertainties involved in the time during its planning itself. True. Which one of the following relates to determine the critical path in PERT? Good morning, Aditya Garu. How are you? बताओ next. Which of the following relates to determination of critical path in PERT? Yes. Event oriented slack only. Event oriented slack only. First of all, we never consider activity in PERT network. No, it is easy. अमन जी, हम PERT में पूरा का पूरा इवेंट का बारे में बात करेगा ना. इवेंट का बारे में बात करेगा PERT में हम, एक्टिविटी का नहीं. सो ये कट करो. And event is related to float or slack? We never talk about float for event. Event is related to slack only. Event को कभी float नहीं लिख सकता. Event को float कभी भी नहीं लिख सकता है. So we can write down it is event oriented slack.
देखो, father notes that his teenage son uses telephone. Debu Malia garu father notes. Debu Malia garu father notes. Debu Malia uses a telephone. He takes not less than 5 minutes for a call. Not less than 5 minutes for a call. This is T naught. Sometimes as much as an hour. TP. 20 minutes calls are most frequent. TM. Most frequent 20 minutes calls, TM. Then what is expected duration? Expected duration. T naught. 4 TM. TP by 6. T naught plus 4 TM plus TP by 6. देबू माल्या गारू का कॉल रिकॉर्ड पूरा बाहर आ गया। क्या रे देबू माल्या, आपका कॉल रिकॉर्ड ओपन हो गया पूरा। समझ आ रहा है क्वेश्चन? देखो इतना इंटेलिजेंस दे रहे, इतना फन एंड वेरी नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे। जेड से ऐसा बोलेगा, देबू माल्या गारू का फादर से कॉल आ गया ना 5 मिनट्स ओनली। व्हेन ही इज गेटिंग कॉल फ्रॉम फादर ओनली 5 मिनट्स। देन व्हेन ही इज गेटिंग कॉल फ्रॉम जेड 1 घंटा चल रहा है, 1 आवर चल रहा है। देन ओनली 20 मिनट्स कॉल्स विद रणसिंगा से कॉल आ गया, ओनली सिर्फ 20 मिनट्स बात करेगा। देखो जेड का भी इंपॉर्टेंट हो गया देबू माल्या को रणसिंगा के बाद। सो दैट इज व्हाई टोटल ओवरऑल 24 1/6। चलो, optimistic, most likely and pessimistic times given. Please tell me the answer in comment box. 5, 10, 21 given. What is TE? 5 plus 4 into 10 plus 21/6, 11 days. 11 days. Then standard deviation kaisa aayega? How can you get a standard deviation? Good. 21 minus 5/6. This is variance. 21 minus 5/6 whole square, TP minus T0/6 whole square. ये क्या बोल रहा है? What is it? Is it variance or standard deviation? Variance. Variance का रूट आएगा। Variance का रूट आएगा। रूट में कौन आएगा? Variance का रूट में standard deviation. Standard deviation. चलो, ये is optimistic time, B is pessimistic time, M is most likely time of activity. What is expected time? चलो, very good. अच्छा गारू कैसा है? कुछ मैसेज भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, आई थिंक इट इज नॉट अच्छा गारू। अच्छा गारू किसी को दे दिया, आपका आईडी किसी को दे दिया क्या बेटा? चलो, PERT स्टडी, टाइम कॉस्ट स्टडी, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफिकेशन, लिंक्ड बार चार्ट, cost build upon project over time can be depicted, choice of technology can be concurrent, choice of technology is predetermined, may be affected by probabilistic activity duration. ये चीज बताओ, who is going to be affected by probabilistic activity duration? probabilistic activity duration का बारे में कौन अफेक्ट करेगा? probabilistic activity duration में कौन अफेक्ट करेगा बेटा बताओ? critical path ना? critical path, please understand that critical path is going to affect, CP is going to affect. so CP को 4 दे रहे, CP को 4 दे रहे, C में 4, रिमाइनिंग कट करो, रिमाइनिंग कट करो। then cost build up on project over time can be detected, time cost study, but it is not matching with any. Is it matching with any? No. Sure, then wait, go ahead. Change of technology predetermined, change of technology can be, choice of technology can be concurrent, choice of technology can be, बताओ बेटा, choice of technology can be predetermined. किसको predetermined हो जाएगा? what technology you have to follow, all are predetermined. if you are using a linked bar chart, linked bar chart use करने के बाद predetermine करेगा, that is predetermined वाला linked bar chart. so छोड़ दो, हो गया काम। 1 2 4 3. so PERT can be taken, cost build up project over time depicted, choice of technology can be concurrent because of time cost study. चलो 1 2 4 3 हो गया। means all of a sudden because of time cost availability you can change, suddenly all of a sudden you can change. probabilistic activity PERT study से रहेगा, then you can't give anything for CP ना, match the following, one can match with more than one, but the most possible as per options लेना पड़ेगा ना। अच्छा गारू, you have to satisfy the options. देखो, you can give here also PERT study को भी दे दो, क्या दिएगा PERT study को? 4, any option with 4, any option with 4 in the options. so what is most possible to be provided as per options देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? so what is the answer here? have you drawn, have you solved the question? B आ रहा है अनन्या? B or C? अरे what happened अनन्या गारू? A, B, C, D, E are the activities along the unique critical path of FOA network. Means they are continuous activities. So what is mu here? Mu. पहले mu बताओ। Good morning अनंत। 43.
7 plus 6 plus 11 plus 14 plus 5, 19, 20, 30, 43. Done. Now standard deviation of entire project under the root 2 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 1 square, 5.83. 43 plus or minus 3 into 5.83. Ananya, identify where you did mistake. चलो डन गाइस. और किसी को डाउट है इनके बारे में? चपने देबू गारू बताओ बताओ जल्दी. विदाउट कैलसी सिग्मा कैसा लेंगे? 2 square plus 2 square 4 plus 4 8 9 17 18 under the root 24. क्या है आपको? Sorry 34 under the root 34. You can take 6 na? So you know it is root 34. You can take 6 na? Nearby. So that easily you can solve the question. 43 plus or minus 3 into 6 18. 43 plus 18. Easily you can do it na beta. 61. Okay. 61. Then 43 minus 18. What is 43 minus 18? 25. Because it is not actually 6. So because of that it should be less than 61 होना चाहिए. Because it is not actually root 36. So the value should be less than 6. So whatever you are getting less than 61, less than nearby 61, this one only. Same like that. It should be greater than 25. 25 का ऊपर लेना पड़ेगा because you are not going to take exactly 6. So it is only possible. थोड़ा यूज करना पड़ेगा कॉमन सेंस बस. देबू गारू थोड़ा दिमाग से सोच के कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा बस. ड्यूरेशन along CP. Duration along CP defines which of the following? Longest duration needed, longest duration permissible, longest duration needed, longest duration permissible. Shortest duration needed, shortest duration needed, longest duration permissible. Shortest duration needed, longest duration permissible. There are 3 parts. For example, we are writing ACE, ABE, BEF. These are the 3 parts. 12 days, 14 days, 13 days. So longest duration permissible. Among the 3, what is permissible? Among the 3, what is permissible? Please tell me. Critical path के लिए permissible क्या है among the 3? Among the 3 critical path के लिए permissible क्या है? Longest duration. Among the 3 critical path के लिए permissible क्या है? Longest duration. Permissible is longest duration only. Now you may take 14 का ऊपर. You can take 16, you can take 20, you can take 30. But what is least needed duration? Least needed duration. What is least needed? What is the shortest needed? 14 days only na? Shortest needed to fulfill the project successfully. To fulfill the project successfully, shortest needed. Good morning, Messi Garu. कैसा है? तबीयत अच्छा हो गया? How is your eye? Is everything okay, Messi uncle? So that is why different paths लिख दिया. We are talking only about critical path here. हम सिर्फ किसका बारे में बात कर रहे हैं बेटा? हम सिर्फ किसका बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ CP का बारे में बात कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं का बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा. We don't want other paths. Only the permissible longest duration path CP, that is only to be taken. So what is answer now? Understand? Needed and permissible difference समझ आ रहा है आपको पहले? The lowest time required to finish the project, shortest duration required to finish project. Longest duration allowable as per the paths. समझ आ रहा है ना? अच्छा गारू, is that clear? चलो. Yes, correct रेवंत जी. सॉल्व करो बेटा, आंसर बताओ. So what are the timings? T values बताओ पहले देबू गारू. T value for A 6, B C F F बोलो F 5, D E 5. So CP ABCF 35 आ गया ना? CP critical path 35.
वेरिएंसेस बोलो, वेरिएंसेस एबीसीएफ को, ओनली एबीसीएफ को वेरिएंस बताओ। 0.44, 1, 2, अगेन 1। अरे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं ना मेसी अंकल, ऐसा भी सोचेगा। अरे एफ को क्या है, एफ को क्या है बेटा, 0। देन व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, 6 plus 10, sorry, 0.44 plus 0.44 plus 1 plus 2, 2.3. So 35 plus or minus 3 into, this is 4. 35 plus or minus 3 into 2.34 आ गया। वो 1/15 क्या है, what is 1/15? sigma by mu. So proportional variation, मालूम था proportional variation, sigma by mu, sigma by mu. Oh no, this is only, now only we are discussing अमन गारू। अभी लिख दो, अभी लिख दो proportional variation, मैथ से आएगा, मैथमेटिक्स क्लास से आएगा, अभी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। proportional variation sigma by mu, sigma by mu 1/15। चलो, what is activity oriented and adopts a deterministic approach? Wrong. CPM is event oriented, adopts probabilistic approach. Wrong. What is event oriented, adopts probabilistic approach? ये दे दो, पोल में दे दो बेटा, पोल में दे दो। वैभव गारू कब आ गया क्लास में? अरे ये कौन है बेटा, जल्दी जल्दी देने का चक्कर में गलत दे रहे हर एक बार। Project length of 60 weeks, variance of 9 weeks, Z is 1.647, मेसी गारू का Z आ गया। सेम क्वेश्चन सॉल्व इन क्लास ऑलरेडी, हाँ वो भी बोल रहे हैं सेम क्वेश्चन सॉल्व इन क्लास ऑलरेडी। नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड, व्हाट इज x? अरे z लिख दिया, x क्या है पूछ लिया। z is equal to x minus sigma by, so x minus mu by sigma, x minus mu by sigma 1.647, x minus 60 by 3, x is equal to clear to everyone? देखो देबू मालिया कोट पहन के आ गया शादी के लिए, शादी के लिए देबू मालिया कोट पहन के आ गया। प्रोजेक्ट क्रैशिंग, शादी क्या हो गया, क्रैश हो गया, शादी पूरा क्रैश हो गया। सो टिल नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड, शादी क्या होता है। अरे एक बार फराश गारू को पूछो, समझ आएगा। अच्छा जी, ये मर जाएगा शादी के लिए। एक बार इनको मैसेज करो ना, ही वांट क्रैशिंग टू स्टार्ट, मिसी अंकल। चलो हाँ मंतु गारू। सो वी आर गोइंग टू हैव द प्रोजेक्ट क्रैशिंग। पहले अच्छे से सुनो, व्हाट इज वी आर गोइंग टू डू इन क्रैशिंग, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन क्रैशिंग। टिल नाउ वी हैव डन, फर्स्ट वी आर फाइंडिंग व्हाट आर ऑल एक्टिविटीज टू बी डन, देन फॉर एवरी एक्टिविटी अ न्यू चैप्टर महिमा, न्यू चैप्टर। व्हाट इज चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर क्या है बताओ कोई आदमी। चैप्टर नंबर 5, 6, चैप्टर नंबर 6 बोल रहे। So we got a construction project for a high rise building. For example, एक high rise building बनने के लिए हमको प्रोजेक्ट का बारे में डिस्कशन चल रहा है। First we are making list what are all the activities required to be finished. Then based on activities, what are parallel activities, what are sequential activities, means which can be done at the same time, which can be done one after another. इनका लिस्ट बना दिया। So इनको नंबर्स डाल दिया, A B C D are 1 2 3 4 activities. Then separately लिख दिया, these are parallel, these are sequential. Then we made a network diagram. एक network diagram बना दिया। After making network diagram, then activity 1 को how many days, activity 2 को how many days, activity 3 को how many days, activity 4 को how many days, ये पूरा बना दिया। Then in the network we came to know there are 3 or 4 different paths. हर एक path को total duration is different. And finally we are going to select longest path duration. What is the name given to it? What is the name given to it? That to the longest path duration, critical path, critical path. So हम identify कर लिया critical path क्या है, longest path duration, and we find that critical path duration को सिर्फ हमको 6 महीना चाहिए। We need to finish as per critical path high rise building construction 6 months time. Then CPM हो गया, critical path बना दिया। Then हर एक activity again PERT analysis को दे दिया। We gave every activity again for PERT analysis. We wrote for every activity optimistic time, pessimistic time, most likely time. Based on the TE value, based on that again critical path time change हो जाएगा। Orally taking some values, taking from optimistic, pessimistic and most likely. For example, you said you required for flooring. For example, I'm saying for flooring. So you said most likely you need 30 days. So the least possible duration we have given 20 days. Longest duration to be finished is given 40 days. Now, this is T0, this is a TM,
This is TP. Now what is the TE value? Batao please. 20 plus 4 into 30 plus 40 by 6. उसे मारा, एक काम करो then. You take it as 45. You take it as 45. Tell me now. Tell me now. Please tell me now. अब क्या हो रहा है बताओ. So it will become 31 days. It will become 31 days. So now for flowing you are going to increase the time in the new network. From CPM method, network diagram बना दिया. CPM से एक network diagram बना दिया. Network diagram is same. Network diagram is same. But the durations are changing. Time durations are changing. Critical path in CPM network. Critical path in port network. CP value. Change हो जाएगा. This is a drawn. CPM का critical path is a drawn from most likely time. Port का critical path is a drawn from T0, TM, TP लेके TE determine करने के बाद then network में डालने के बाद CP आएगा. समझ आ रहा है difference between critical path time in CPM network, critical path time in port network. Is that clear guys? Critical path time in CPM network and critical path time in port network. समझ आ रहा है पहले difference? Are you getting the difference between CPA? चलो then CPM से 6 months आ गया, 6 months आ गया. Port से we find 7 months required. Critical path time. समझ आ रहा है? Because we have derived using T0 TM TP. अरे बाबू अमन जी सुनो, CPM में हर एक एक्टिविटी को सिर्फ एक टाइम है, सिर्फ एक टाइम है हर एक एक्टिविटी को. Every activity have only one time and that is the TM. That is the TM. But port में हर एक एक्टिविटी को 3 टाइम्स है. Every activity have 3 times T0, TM, TP. Now using this what you are deriving TE, you are converting to 1. Based on that again activity completion time here, activity completion time here will vary, differ हो जाएगा. Yes or no? CPM network में activity completion time, port network में activity completion time differ हो जाएगा ना हो जाएगा? बताओ, vary हो जाएगा ना हो जाएगा? So now that critical path time for CPM we got as 6 months, for port we got as 7 months. When you are going for crashing ना, अच्छा करो. When you are going for crashing ना, किसी को भी दोनों से लेना पड़ेगा. किसका मैक्सिमम टाइम होगा वो लेना पड़ेगा. You are going for crashing ना, crashing का बारे में ऐसा करना पड़ेगा. Because we are not talking about type of the project now. Now we are talking about crashing the project. इसके लिए बात कर रहे हैं. For that we are talking. So now ये आ गया 7 months. 7 months आ गया. Okay, done. Now what after part what you are doing? Part का बाद में you have determined variance. You have determined standard deviation. ये पूरा का पूरा determine कर दिया. After that probable project duration ढूंढ लिया. Probable project duration क्या है? Find out कर दिया. You have find out the probable project duration to be completed. It is between 150 to 240 days. Now you went to the client, you discussed it, and it is given you are going to finish it in 240 days. Now you went to the client, you discussed it, and it is given you are going to finish it in 200 days. Now you went to the client, you discussed it, and it is given you and it is given you are going to finish it in 200 days. Client won't give that much big time. Na? Client won't give you that much big time. So you finally decided with the client. You are going to finish 200 days. Okay, बस बहुत अच्छा करा दिया. After all have been done, CPM analysis करा दिया, port analysis करा दिया, T0 TM TP बना दिया. Finally you found maximum you need 240 days. You went for client and discussed I will finish the project in 240 days. But client said I don't want that much time, I don't have. Finish in 200 days. Okay, you accepted. For this 200 days again you reallotted. Activity time. Buffer time लेके activity को हर एक activity को अच्छे network बनके activity times allotted. Activity work. समझ लो बेटा. X is not doing the work. X is allotting. हाँ उगांडा 450 days में प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो करो, नहीं होगा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को दिएगा. So now you need to reduce your duration. What is object here? What is object? Crashing का object क्या है? Project is crashed. Reduce. What is primary objective? Reduce duration of project. Reduce duration of project. First of all, ये project duration कम करना पड़ेगा. Reduce duration of project without affecting first quality बेटा काश नहीं. Without affecting quality. Next, without increasing cost. Without increasing cost. These are the two objectives. Primary objective is
reduce duration. Secondary objectives, you are not going to compromise in the quality because client does not accept it. You are not going to increase the cost increase हो गया, project का profit कम हो जाएगा, you are getting less profit. So you decided to finish in 200 days. Client asked you to finish in 150. Then you ask the client, give me some time, I will analyze, I will tell you how much duration में खत्म हो जाएगा अच्छे से, without increasing cost. Client is asking you 150 days में खत्म होना चाहिए without increasing the cost. Then you accept. Can you accept for it? No, I need to take more resources, more human power लेना पड़ेगा. We have to finish in 150 days means we have to take more people, more workers in short time. So ये 50 days का काम remaining 150 days में देना पड़ेगा. So either you need to increase the resources or you need to increase work hours. Two choices. Either you need to increase the number of people working in it, or for the existing people you have to give more work hours. So that calculations to be done. Finally, whether it is feasible or not, without increasing cost ये बोलना पड़ेगा 150 days में हो जाएगा नहीं हो जाएगा. So that analysis we call it as crashing. समझ आ रहे? Reducing project duration without increasing cost, without compromising the quality. So after analysis, you came to know, for example, you can finish in 175 days without increasing cost. You accept offer. You go to client, you say 150 days से same cost को नहीं हो जाएगा, 175 days को same cost को हो जाएगा. If you want in 150 days, increase the cost, this much is required, so that I can recruit more people, I will finish the project. Time cost relation इधर बात करेगा. Project crashing is reduce the duration of project without affecting quality, without increasing the cost. So crashing is a time cost relation. ये बोल रहे हैं हम क्या? Time cost relation. So project execution में दो आदमी चलेगा. Two people will be there in any project execution में दो आदमी चलेगा. One is customer who is called as a client. Second one is contractor. So ये बात सुनो. Customer is not the final ultimate person who is using the project. Customer is the one who handed the project to you. For example, metro rail is going to be run on the track. Passenger is the customer. But who is the client? Who is the customer? Actually, L&T is the client. L&T पूरा का पूरा काम नहीं करेगा. L&T पूरा का पूरा काम नहीं करेगा ना. फाउंडेशन एक सब कॉन्ट्रैक्टर को दिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को दिएगा. Yes or no? सब कॉन्ट्रैक्टर चलेगा ना. I will tell you in a simple language. Okay, there is a software project which is US based client. इनका कंपनी में सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रोजेक्ट था. ये क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट को दे रहा है यूएसए में. नाउ दैट माइक्रोसॉफ्ट इज टेकिंग द प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिवाइडेड इनटू 4 सब प्रोजेक्ट्स. एक सब प्रोजेक्ट टीसीएस को दिएगा और दूसरा सब प्रोजेक्ट एचसीएल को दिएगा और तीसरा सब प्रोजेक्ट विप्रो को दिएगा. सो प्राइमरी क्लाइंट इज माइक्रोसॉफ्ट. कॉन्ट्रैक्टर कौन है? इंडिया में रहेगा कॉन्ट्रैक्टर सर. टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस चलेगा, ऐसा चलेगा. सो क्लाइंट is asking you, Microsoft people are asking TCS people to finish in 150 days. Now these people have to think about whereabouts crashing and all the things like time cost analysis. These people, TCS people talk about time cost relation. Microsoft people को ये पूरा नहीं चाहिए. No, it is a true beta. TCS is only contract. They won't get any software contracts directly. No Indian software company doing a direct software contract. This is true actually. Most of Indians moving to software sector. Most of Indians moving to foreign countries. Why? What is the reason? Because these are like our mason here. हमारा घर में you are giving contract to a engineer. You are giving contract to a builder. But इनका नीचे mason लेबर वर्कर हो जाएगा ना. Same जिंदगी ऐसा रहेगा. It is true. Software का जिंदगी भी ऐसा रहेगा. Yes, we are just workers here. Not directly company से deal करने वाला नहीं. समझ आ रहे हैं? So there is a chain will be there. समझ लो बेटा, chain will be there. So directly project is handled by IBM. Infosys or else Microsoft. Microsoft वाला करेगा, Microsoft वाला. IBM वाला करेगा. TCS नहीं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, that is why. चलो. That is why those are the richest. Why not our TCS is not richest? Why not Indian Infosys is not richest than Google? अरे इनका ये प्राइमरी प्रॉफिट लेके 10% 20% आपको दे रहे. 100% प्रॉफिट कौन ले रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ले रहा है 100% प्रॉफिट. 100 रुपीस माइक्रोसॉफ्ट को आ गया प्रॉफिट एज प्रॉफिट. 20 रुपीस TCS को दे रहा है, 80 रुपीस से पकड़ लिया. That is why those become the richest countries. समझ आ रहे बेटा? This total is project management. Those are richest countries. They are not doing the work. Management क्या है मालूम था? मैनेजमेंट क्या है मालूम था? एक आदमी को आप काम मत करो, आप सिर्फ मैनेज करो और दूसरा आदमी को काम दे दो, ये करेगा पूरा का पूरा काम, आप प्रॉफिट करो. So you are getting a project of 100 rupees. सुनो बेटा, you are getting a project, total project cost is 100 rupees. इनमें प्रॉफिट 50 रुपीस होगा. You are giving to some other person for 60 rupees. आपको 40 रुपीस प्रॉफिट है ना? सिंपल लॉजिक. Total cost of project you are getting for 100 rupees. Okay, in that profit 50 rupees. So you are selling it total for 150 rupees. So X is selling it for 150 rupees. What is X profit? X profit क्या है? 50 rupees. X का profit 50 rupees. Now X is not doing the work. समझ लो बेटा, X is not doing the work. X is allotting to A. A is taking 110 rupees, finish the work. 110 rupees, finish the work. कुछ प्रॉब्लम नहीं, X कोई काम नहीं कर रहा है. Without doing the work, X को प्रॉफिट क्या आ रहा है? 40 rupees आ रहा है. Now X is taking 5 projects. A, B, C, D, E को दे रहा है. हर एक प्रोजेक्ट से 40 रुपीस है. 5 प्रोजेक्ट्स 200 रुपीस विदाउट डूइंग वर्क. सिर्फ मैनेज कर रहा है 200 रुपीस आ रहा है X को. A को 10 रुपया, B को 10 रुपया, C को 10 रुपया, D को 10 रुपया, E को 10 रुपया. देखो, सो विदाउट काम करने वालों को सिर्फ 10 रुपीस आ रहा है. काम करने वालों को क्या प्रॉफिट आ रहा है? 10 रुपया आ रहा है. समझ आ रहा है बेटा? सिर्फ मैनेज करने वालों को क्या आ रहा है? 200 रुपीस आ रहा है. So that is why most of the engineers want to become project managers.
अच्छा गारू को मैं ये भी बोल दिया, अरे बाबू सीटीएम ले लो, स्ट्रक्चर्स मत ले लो, these are all structural engineers, these are all structural engineers. X is a project manager, CPM कर लिया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कोर्स कर लिया X, इनको स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट शेयर कर दिया, क्या रे अच्छा देखो आप ABCD में चल रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में चल रहे हैं, ये सीपीएम वाला आएगा पूरा का पूरा पैसा लूट के चल जाएगा, पूरा का पूरा पैसा लूट के चल जाएगा। हाँ सोहान, X is Sohan now, Sohan is doing ना, X is Sohan, ABCD अच्छा गारू, चलो। So this is the technique of building wealth for you. आप समझ आ रहे बेटा, आप आपका काम खुद से मत करो, if you do the work you are just getting minimum profit. If you take the contract, distribute to 5 people, ये काम करेगा, ये काम करने के बाद प्रॉफिट आप शेयर करेगा, so you can get the projects, that's it. I suggest any of my student, आप काम मत करो, आप प्रोजेक्ट से लेके आओ, काम और दूसरा आदमी करेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा. This is the criteria to get more wealth. चलो project cost, project cost, there are two types of cost for a project. Correct अमन जी, no nobody will say this बेटा, people will say अच्छे से पढ़ लो, जॉब मिलेगा, पैसा जमा करेगा, this kind of business tricks आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा. डायरेक्ट कॉस्ट, indirect cost, direct cost, indirect cost. Direct cost is also called normal cost, direct cost is also called normal cost, indirect cost is called project overheads. ये कुछ कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था प्रोजेक्ट में, कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था प्रोजेक्ट में, बट विदाउट विच वी कांट डू द वर्क, विदाउट विच वी कांट डू द वर्क. सो मंतोष कुमार पोराश गारू को शादी होना चाहिए, शादी के लिए सिर्फ मंतोष गारू एंड उगांडा का गर्ल बस हो जाएगा ना, ऐसा नो, हाँ उगांडा और जिम्बाब्वे से गर्ल होना चाहिए बस, इनको अच्छे से, इनके अच्छे से कपड़ा लेना पड़ेगा, शॉपिंग करना पड़ेगा, ये पूरा हो जाएगा. बट इधर आने के बाद शादी करने के लिए शामियाना चाहिए, शामियाना चाहिए ना पक्का, टेबल चेयर चाहिए, ये रेंटेड वाला हो जाएगा, रेंटेड वाला. देन खाना का कास्ट हो जाएगा, खाना का कास्ट हो जाएगा, पूरा इनडायरेक्ट कास्ट है. डायरेक्ट कास्ट क्या है, शादी करने के बाद पूरा लाइफ टाइम ये उगांडा गर्ल को पैसा देना पड़ेगा, शी हैज टू मेंटेन हर शॉपिंग, शी हैज टू मेंटेन हर एक्सपेंसेस, दैट इज द डायरेक्ट कास्ट. डायरेक्ट कास्ट. इनडायरेक्ट कास्ट क्या है, इनडायरेक्ट कास्ट क्या है, शादी में रिलेटिव्स आएगा, 1000 पीपल आर इनवाइटेड, इनका खाना का खर्चा हो जाएगा इनडायरेक्टली, इनका शामियाना का खर्चा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इनडायरेक्ट कास्ट. ब्यूटी पार्लर का खर्चा हो जाएगा, हाँ बॉटल्स भी मिलेगा, हाँ मंतोष कुमार पोराश का दोस्त को बॉटल्स भी दिएगा, ये पूरा इनडायरेक्ट कास्ट है. सो डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोजेक्ट, मैरिज इज ए प्रोजेक्ट, मैरिज प्रोजेक्ट में डायरेक्टली रिलेटेड कास्ट कम हो जाएगा, इनडायरेक्ट कास्ट ज्यादा हो जाएगा. सो यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, हम घर बनने के लिए, एक घर बनने के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन में सीमेंट, ब्रिक, सैंड, फ्लोर टाइल्स, स्लैब, all these are direct costs, and even including labor cost also, those who are working for the house construction, that is also direct cost. But when you are making the elevation, you are bringing scaffolding timbers, elevation करने के लिए scaffolding work करेगा timber, rented वाला, that is an indirect cost, that is an indirect cost. Then you got all the materials and you are putting in the site, then you are going to put one watchman, ये watchman नहीं होगा तो next day आपका पूरा material चल जाएगा ना, मंतोष गारू लेके चल जाएगा, हाँ मटेरियल गायब हो जाएगा, so you are giving salary for the watchman, watchman को सैलरी देना पड़ेगा ना पड़ेगा, yes or no, so 6 months watchman को सैलरी देना पड़ेगा. Then your bike petrol, vehicles का खर्चा हो जाएगा, vehicles का कास्ट हो जाएगा, transportation vehicles का रेंट हो जाएगा, because materials are transported from the factory to your site, material transport cost, all these are indirect cost हो जाएगा. So you are going to start a big project, आप एक big project 100 apartment flats, 100 apartment flat बनने के लिए, for that only 100 apartment flat सेल करने के लिए marketing people चाहिए, ऑफिस बनना पड़ेगा, accountants चाहिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम में डालने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, ऐसा ना, so much setup चाहिए ना, ये सेटअप पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, indirect cost में चलेगा. अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला वर्कर्स, मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट कम्स अंडर डायरेक्ट कास्ट. ये अपार्टमेंट सेल करने के लिए, ये डायरेक्ट कास्ट पूरा लिखने के लिए, ये डायरेक्ट कास्ट अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए स्टाफ चाहिए, एज वेल एज कंप्यूटर्स, लैपटॉप पूरा चाहिए, अपार्टमेंट वॉचमैन को सिक्योरिटी रूम चाहिए, इनको सैलरी चाहिए, ऑल दोस कम्स अंडर इनडायरेक्ट कास्ट. समझ आ रहा है बेटा? चलो, व्हाट आर डायरेक्ट कॉस्ट्स? डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट means each and every person who is literally involved in the construction activity, mason, labor worker, sub engineer, chief engineer, site engineer, everyone, inka salaries, that comes under direct labor cost, purely involved in the construction activity, purely related to construction activity. Materials, fuels and consumable cost, again here also cement, brick, stone, sand, even the diesel or petrol used in the cement concreting mission rotate करने के लिए fuel use करेगा हम, वो भी, that is also because without that we can't do construction, without that we can't do construction or mixing mission, that activity, हर एक consumable related, directly involved in the construction activity, directly involved in the construction activity. Then other direct expenses like permissions,
registrations, stamp duty cost, etc. So that is also only for the project work only. You are getting government permission, municipal permission, layout permission देने के लिए cost, building registration के लिए, electricity registration के लिए, water connection registration के लिए, stamp duty, all these are related to our project only. Everything related to our project only. That comes under direct cost. Indirect cost में staff, security, admin, and other people's salary who are not involved in construction, not directly involved in construction. So security person not involved, he's putting the bricks there, he's working with the cement. His admin people, is they are doing anything? Well, the accountant can check the whatever incoming amount, whatever outgoing amount. That's it. Not at all involved. Not at all involved in the construction activity. Those people, but they are needed. They are needed. Without them, can you do a building, high-rise building? A high-rise building हो जाएगा. हाँ, वो भी बात करेगा रेवंत, वो भी बात करेगा हम, वो भी बात करेगा. Then rent, lease, or office cost. So you are making one project for 1.5 year, 100 flats apartment, 1.5 year office rent, 1.5 year material गोडाउन में स्टोर करेगा, एक गोडाउन का लीज रेंट, and you are bringing machinery, concrete mission, slab concrete mixing mission, slab बनने के लिए mission, scaffolding timber, like that. So many things you can bring on rent basis, time to time, not throughout the length. Are you bringing slab mission during the flooring? Are you bringing scaffolding activity during excavation whenever required on rent basis, time to time rent basis? Their cost, miscellaneous expenses,